Hello everyone, this is Nitika and today we will start our new chapter of science, adaptation in plants. So now let's begin. What do you mean by adaptation? Adapt means to change, okay? जैसा कि अगर आप किसी लोकेशन पे जाते हैं परमानेंट रहने के लिए तो आप क्या करते हैं, आप ये कोशिश करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंज by which an organism or species become better suited to its environment. What are the different environments that we will study in habitat? And there are two type of species around us, plant and animal. In this chapter we will study about plants. Now let us read. Now let us read about adaptation in plant. That is how plant adapt themselves in different environment or in their different habitat. So basically हमारा इन्वॉल्वमेंट टू टाइप का होता है, लैंड एंड वाटर. प्लांट ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर. प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो प्लांट लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. एंड दैट इंक्लूड डेजर्ट, कोस्टल, रेन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस. The mango tree, rose, shrub, watermelon, creeper and cactus are some such plant. ठीक है, they are terrestrial plant. Mango, rose, watermelon. Plant that grow in water are aquatic plant. जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं. क्लियर? दे ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड ओशियंस. Lotus and water lily are aquatic plant that grow in ponds and lake. Water lily होता है आपका, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वाटर में ग्रो करती हैं, तो इन्हें हम aquatic plant कहते हैं. Aquatic plants are of three types: floating, fixed and mangroves. Plants growing in different condition have different body features. These features help them live comfortably in a particular place. For example, a cactus plant has a feature that allow it to grow well in desert where there is very little water. The body feature and habit that help the living thing live in its natural surrounding are called adaptation. एक लिविंग थिंग की बॉडी फीचर एंड हैबिट जो उसको हेल्प करती है उसके नेचुरल सराउंडिंग में रहने में इज नोन एज अडेप्टेशन. इज दैट क्लियर? Adaptation in terrestrial plant. In the previous slide I told you what is terrestrial plant, that grows on land. Plant that grows on land. Now we will study about adaptation in desert plants. A sandy desert is a vast area of land covered with sand. Desert area कैसा होता है? पूरा sand से covered होता है. It is dry, hot place with little rain. In a desert, hot winds blow during the day, while the nights are cold. यहाँ पे दिन में hot winds blow होती है and nights are cold. The desert plants are adapted to grow in hot, dry condition with little water. Please underline this line. Cactus plant have certain adaptation to survive in a desert.
कैसे कैक्टस प्लांट ने अपने आप को डेजर्ट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया. प्लांट लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि while explaining कि while explaining photosynthesis that water evaporate through leaves when sunlight falls on it, but a desert plant cannot afford to lose water. In cactus plant, the leaves are therefore reduced to spines to prevent loss of water. See the picture? Leaves modified into spines or hair to reduce water loss. ये जो काटे हैं ना, देखिए ये. Moreover, the spines protect the plant from herbivorous animal. ये spines इन्हें herbivorous एनिमल से बचाते हैं. हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं? दोज एनिमल विच ईट प्लांट्स, हर्ब्स. क्लियर? लाइक अदर प्लांट हैव लीव्स, है ना. तो कैक्टस प्लांट का लीफ कहाँ गया? कैक्टस प्लांट ने अपने लीव्स को स्पाइंस, कांटों में बदल लिया. इज दैट क्लियर? The stem of the cactus is green. The green stem make food for the plant. In most cactus plant, the stem store food and water. In other plant, we find that mainly leaves are green because of presence of chlorophyll into their leaves, which is green pigment that help during photosynthesis. But there is no leaf in cactus. So where photosynthesis will occur? कहाँ photosynthesis होगा? लीफ तो है नहीं. So cactus use their stems for process of photosynthesis. Now look at this image. See the stem of this cactus plant. This stem is used for photosynthesis. Thick stem that can store water. Most cactus plant flower at night. If they were to bloom during the day, the flower would not survive in the heat of desert. The cactus roots are spread close to the surface of the ground and are able to absorb even the few drops of rain. थोड़ी सी भी रेन की ड्रॉपलेट्स अगर इसे मिलती है तो वो स्टोर कर लेता है. The cactus plant absorb plenty of water when it rains and store it in stem. जब भी बारिश होता है, जो भी इसको वाटर मिलता है वो स्टोर कर लेता है अपने स्टेम में. The plant survive on this water for rest of the year. उतने वो जो वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है उसमें पूरे साल तक वो सरवाइव करता है. स्टेम ग्रीन क्यों है? क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो स्टेम में ही हो रही है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. Now in this slide we will be studying about adaptation in plant of the coastal region. Coastal region क्या होता है? All those area that are located around coast, समुद्र के किनारे. Plant growing in warm coastal region have to adapt to bright sunlight, strong winds, sandy soil, high humidity, water vapor in the air and हैवी रेनफॉल. प्लांट जो वार्म कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें कैसा इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना होता है? ब्राइट सनलाइट, स्ट्रॉन्ग विंड, सैंडी सॉइल, हाई ह्यूमिडिटी इन एयर एंड हैवी रेनफॉल. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कोस्टल प्लांट दैट इज कोकोनट पाम. Coconut palm have adapted themselves to growing in warm coastal region. Look at this image.
What is stem? It supports the plant. So in coconut palm, stems are thick and strong to tolerate strong winds. Now roots. Long roots grow deep into the sandy soil and firmly anchor the plant. इस roots की वजह से ये strongly खड़ा रहता है. Now the leaves are thick and formed of many long strips to bear the force of strong winds. जो विंड आती है उससे बियर करने के लिए ये लीव्स थिक होती हैं. They also have a shiny surface to reflect the sunlight. सनलाइट से बचने, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए. Large fruit remain afloat in sea water for many days and give rise to a new plant on reaching to the shore. यही फ्रूट जो है जब ये सी शोर पे गिरते हैं तो वहाँ से नया प्लांट को मतलब एक नया प्लांट यहाँ से ग्रो करता है. Adaptation in plants of rainforest. Rainforest is made up of two words, rain plus forest. Rainforests are in warm region that get good amount of rain throughout the year. Plant growing in rainforest are adapted to grow in wet condition. उन्होंने adapt कर लिया है wet condition में grow करने के लिए. Now we will see how these plants have adapted themselves. Most plants have smooth stems which allow water to quickly flow toward the ground. The leaves have a waxy surface and drip tip. Such leaves make raindrops run off quickly. The growth of trees in rainforest is so dense that very little sunlight reaches the forest floor. यहाँ के जो ट्रीज होते हैं बहुत ही डेंस होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं कि सनलाइट को नीचे तक आने में बहुत टाइम लगता है. A variety of shade loving plant grow below the trees. ये जो shade loving plants होते हैं ये यहाँ grow करते हैं. To get enough sunlight, trees in a rainforest grew very tall. बहुत ही, देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं कितने लंबे trees grow कर रहे हैं. Some plants climbed on trees to reach the sunlight available at the top. Did you know the Amazon rainforest has the largest collection of plants and animals? Around 70% of plants found in rainforest have medicinal properties. The Amazon rainforest is called the pharmacy of world. See this, Amazon forest is here in South America. Clear? Now moving to our next slide. See, this is equator and Amazon rainforest lies on the equator and it receives maximum rainfall. Now in this slide we will study about adaptation in plants of deciduous forest. Deciduous क्या होता है? Deciduous trees and shrub that seasonally shed leaves. वो plants जो seasonally अपने leaves को shed करते हैं. Deciduous forests are found in regions that have a very cold winter season. To withstand the cold winter condition, the trees have a trunk with a thick bark. The leaves are broad and are able to capture lots of sunlight in summer. During winter, the trees shed their leaves. New leaves grow again in the spring, which marks the onset of summer. Now see in this image, विंटर के टाइम क्या है, इन्होंने अब जो लीव्स है वो शेड हो गई हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्प्रिंग में ग्रो कर रही है लीव्स.
और अब फिर समर में जो है पूरे लीव्स आ गए, ठीक है। Now in this slide we'll be studying about adaptation in aquatic plant. In the previous slide I told what is aquatic plant, that grows on water. Some aquatic plant grow under the surface of water. Some have only leaves growing above the water, while still other float on the surface. Aquatic plants are adapted to condition of plentiful water, less sunlight, less air and strong water currents. Aquatic plant have air spaces in their stems and leaves. ये इनके जो stems हैं इसमें क्या होते हैं, air spaces होते हैं, ठीक है। The air spaces allow the stem and leaf to stay afloat. ये तैरने के लिए help करते हैं इन्हें. The leaves take in air and send it to all parts including roots. ये sunlight receive करते हैं, sorry air receive करते हैं and stems के through roots तक उसे पहुंचाता है. The flexible stem and leaves tolerate strong water currents. Seeds of aquatic plant float and can reach far away places. जो ये जो seeds होती हैं वो दूर तक जाती हैं और नए plants जो होते हैं वो create करती हैं. A water lily plant is a good example to study adaptation in aquatic plant. This is lily. Its flower and broad leaves float on the surface of water. To obtain sunlight. The rest of the plant remain under water. ये लिली फ्लावर आप लोग देख रहे हैं, ये इसके लीफ वाटर सरफेस पे हैं एंड उसके स्टेम्स एंड रूट्स अंडर वाटर हैं. Adaptation of mangroves. What is now in this slide we'll study about adaptation of mangroves. And एक मैंग्रोव क्या होता है, एक ऐसा ट्री जो लैंड एंड वाटर बॉडी लाइक ओशियन जहाँ मिलते हैं वहीं पे ये ग्रो करते हैं. मैंग्रोव्स आर एक्वेटिक प्लांट. They are trees and shrubs that grow in the area where the soil is clay and covered with salty water. Salty water क्यों? क्योंकि ओशियन का वाटर सॉल्टी होता है. The clay soil below the water does not have air, so the root of the mangrove tree grow above the ground and take in air directly from the atmosphere. See the image. ये देखिए रूट कैसे आ रहे हैं बाहर, वाटर लेवल से. क्यों? क्योंकि इनको एयर एब्जॉर्ब करना है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली. The mangrove trees have stilt roots. ये है stilt roots. देखिए ये stilt roots कहलाते हैं. That provide extra support to the trees. These features help the mangrove tree to grow well at the edge of the ocean. You can see in this all image. Life skills. Why should we protect mangroves? Many kind of marine and other animal live in the mangroves. If mangroves are damaged, many marine plant and animal will not be able to survive in this region. Mangrove help in reduce the force of ocean storms including tsunami. That's all for the chapter. I hope you all have understood. And thank you. If you have any doubt, please ask.